औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरे मोहतरम सुनने वालों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपकी रहनुमाई के लिए मैं कुछ हिस्ट्रीज का टॉपिक शुरू किए थे, ख़त्म हो गए। अभी शॉर्ट केसेस शॉर्ट केसेस रिकॉर्ड करने शुरू कर दिया है। और आज के सिलसिले में जो एक इंतहाई अहम शॉर्ट केस है, जो कि है एनीमिया विद हिपैटोस्प्लेनोमेगैली। एनीमिया विद हिपैटोमेगैली भी हो सकता है, एनीमिया विद स्प्लेनोमेगैली भी हो सकता है, एनीमिया विद हिपैटोस्प्लेनोमेगैली भी हो सकता है। तो मैं एक जनरलाइज टर्म के ऊपर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये केस आएगा तो आपने कैसे एग्जामिन करना है। इसमें आपको कमांड आएगी डू द एब्डोमेन एंड रेलिवेंट आ सकती है, या इसमें आपको कमांड आ सकती है डू द जीपी एंड रेलिवेंट हो सकता है। तो कोई भी कमांड आ सकती है, ठीक है। एब्डोमेन और उसमें आएगा तो हिपैटोस्प्लेनोमेगैली या जॉन्डिस होगा। एनीमिया होगा तो उसके साथ आपको रेलिवेंट में एब्डोमेन देखना हो सकता है। तो इनिशियली स्टार्ट आपने करना इंट्रोडक्शन और कंसेंट से, फिर उसके बाद एक्सपोजर निपल टू नीज होना चाहिए, लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट कवर होने चाहिए। उसके बाद आपने जनरल लुक गो एट द फोर्थ एंड, और आपने लुक देखनी है कि सिक है या वेल लुकिंग है। मेलिग्नेंसी दे वो भी सिक लुक इन मेलिग्नेंसी। देन आपने न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है। देन आपने देखना है कि द चाइल्ड इज इन रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और साइनोज एट रेस्ट। सो अगर देखें आपने कार्ड रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में आपने देख लिया कि अगर कार्डिक फेलियर में है या नहीं है, कोई रिस्पायरेटरी इशू है या नहीं। इसी तरह आपने साइनोसिस देख लिया तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज साइनोटिक है या नहीं है। पैलर और जॉन्डिस से इमीडिएट आपको पता चल जाएगा कि एनीमिक है या जॉन्डिस्ड है, डिफरेंशियल चेंज हो जाएंगे। देन यू हैव टू सी द डायग्नोस्टिक फेशिस, कि किस तरह की डायग्नोस्टिक फेशिस हैं। थैलेसीमिक फेशिस, जैसे आपको पता है कि थैलेसीमिक फेशिस में डिफरेंट डायग्नोस्टिक फेशिस होते हैं। तो आपने देखने हैं कि बच्चा सिक लुक है, जैसे बताया, साइनोटिक है, पैलर है, जॉन्डिस्ड है, या डायग्नोस्टिक फेशिस हैं। उसके बाद आपने फुट एंड के ऊपर जाके आपने उसका रेस्पायरेटरी रेट काउंट करना है। अगर एब्डोमेन की कमांड है तो आप डायरेक्ट एब्डोमेन से ही शुरू करेंगे। आफ्टर जनरल लुक के बाद आप डायरेक्ट एब्डोमेन पे आ जाएंगे। आपने फिर देखना है कि डिस्टेंडेड है, स्कार मार्क्स है, विजिबल वेन्स तो नहीं है। तो ये डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, विजिबल वेन्स नज़र आ रही हैं। ये डिफरेंट स्कार मार्क्स हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। सब कोस्टल इंसिजन जो है कोलिसिस्टेक्टमी का हो सकता है, मिनी लेप्रोटमी का एक लेवल हो सकता है, ट्रांसवर्स इंसिजन हो सकता है, हर्नियो हेमिकोलेक्टमी का, मैकबर्नीज इंसिजन एपेंडेक्टमी का, पारेक्टल इंसिजन्स है, ट्रांसवर्स इंग्वाइनल लीजन है, फिर इसमें इंग्वाइनल लीजन है, लोअर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन है। सो मुख्तलिफ किस्म के एब्डोमिनल स्कार्स हो सकते हैं। आपने इंस्पेक्शन के बाद एब्डोमेन को पहले लाइट पल्पेट, यू हैव टू डू द लाइट पल्पेशन टू गेट द पेशेंट रेपो और उसका सॉफ्ट टेंडरनेस और वो देखना है। उसके बाद आपने डीप पल्पेशन करनी है एंड देन फॉलोड बाय द पल्पेशन फॉर द विसरा। सो लेवर आपने देखना है, लेवर के जो एट्रीब्यूट्स हैं कि कंसिस्टी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, स्पैन क्या है, टेंडरनेस है, सरफेस बॉर्डर क्या है। देन स्प्लीन के बारे में भी देखना है, जो उसके डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं कि स्प्लीन का क्या डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है, नॉच फील होती है, कैन नॉट गॉट अबाउट स्वेलिंग। फिर उसके बाद आपने एसाइटीज़ देखने, फ्लूइड थ्रिल अगर मैसिव एसाइटीज़ हो, शिफ्टिंग डलनेस अगर कम एसाइटीज़ हो। देन यू हैव टू सी द इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, बिकॉज inguinal lymph nodes is very important. You do the percussion for ascites. So this is inspection, and after inspection, palpation, then percussion. Then you have to go to the systemic findings and finding of the systemic for look for the systemic signs. Like in hands, you have to look for the pallor, pulse, stigmata of liver disease such as clubbing, pulmonary edema, flapping, tremors, पाल्मर पैलर और पल्मोनरी एडिमा। फिर आर्म्स के ऊपर आपने बीसीजी स्कार को देखना है। आइज़ के ऊपर यू हैव टू सी फॉर द पैलर, कंजक्टाइवल पैलर, जॉन्डिस, साइंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, यू हैव टू नो इट। माउथ के ऊपर आपने ओरल अल्सर्स, ओरल थ्रश को देखना है, अल्सर्स को देखना है, दैट कैन बी द साइंस ऑफ मलिग्नेंसी और SLE, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ओरल थ्रश एंड ओरल अल्सर्स। Then you have to check the cervical and axillary lymph nodes in leukemia. Then you have to see the legs for edema, bone tenderness. Then you have to screen skin for petechiae and bruises.
So this is the edema, pitting edema, then the petechian bruises. This can be signs of malignancy. Then you have to screen back for BMA dressing. So this is the description. You can make your own description and you can practice this description, because in exam you don't have the time to think. So you have to practice this thing before. Like I have made an hypothetical description, like I have just examined a 6-year-old boy or girl who is well or sick looking, adequately nourished child without obvious respiratory distress and cyanosis at rest, and there are no diagnostic and dysmorphic facies. The child is markedly pale but conscious oriented and was cooperative during my examination. He has respiratory rate of 32 per minute, heart rate of 110 per minute, and is febrile with temperature of 100 degree Fahrenheit. The abdomen is distended with no visible veins or scar marks. The liver is palpable 8 cm below right costal margin with a total span of 12 cm. It is firm in consistency, non-tender, with smooth surface and regular margins. The spleen is palpable 6 cm below left costal margin, and I cannot get above the swelling. There are no abnormal facies, no lymphadenopathy, no jaundice, petechiae, bruises, edema, or bony tenderness. Based on these findings, the most likely differentials are. So you see, you have to first tell the positive things, then the negative things, and followed by you have to tell the differentials. So the differentials are, you can make if there's anemia and hepatosplenomegaly, rule out the infections, inflammations, infiltrations, and the storage disorders like infections such as enteric fever, malaria, leishmaniasis, and anemia, hemolytic anemia such as thalassemia major, and malignancy such as leukemia and non-Hodgkin lymphoma. Then if there's a jaundice and splenomegaly, then you have to rule out hemolytic anemia, chronic liver disease, and malaria. If there's anemia, jaundice, and hepatosplenomegaly, you have to rule out CLD. In that cases, you have to rule out acute hepatitis, and other differential can be Wilson disease, then infections, leishmaniasis, malignancy, and storage disorder, then anemia. The anemia's differential can be hereditary spherocytosis and autoimmune anemia. Then anemia with a massive splenomegaly, it can be due to infections like chronic malaria, leishmania, anemias like such as hereditary spherocytosis, thalassemia major, storage disorder, Gaucher disease, Niemann-Pick disease, malignancy like chronic myeloid leukemia, and portal vein thrombosis. So investigations and treatment depend upon the cause. I will shortly, rapidly touch few topics such as the common topics. If there is a hereditary spherocytosis, we have to do the labs such as a CBC, peripheral smear. There are, you can say that my investigations will depend. Some will be for the diagnostic purposes, and someone will be for the supportive purposes. For if there is hereditary spherocytosis is your differential or diagnostic working diagnosis, then the CBC will be for the diagnosis, peripheral smear to rule out the differentials, to see anemia and polychromatophilic reticulocytosis with spherocytes. Then osmotic fragility test. You should know that exposure to an osmotic fragility test is the exposure of the RBCs to the hypotonic saline that cause RBCs to swell, and spherocytosis lies more easily than biconcave cells. RBCs are devoid of glucose overnight and incubated at 37 degrees. Gel electrophoresis, cryohemolysis test, and gene mutation for beta spectrin. You should know these, but you should not just before the explanation. What is the treatment of hereditary spherocytosis? It is RCC transfusion, folic acid 1 milligram. Then the examiner can ask you for the indication of for splenectomy. You can say like it's due to poor growth, severe anemia, gallstones, cardiomegaly, aplastic crisis after age 5 years. Then for the leishmania, the labs are, you have to see the CBC in which you will see the pancytopenia, leishmania, Donovan-Ibod antibodies in the smear, BMA, bone marrow aspirate for MS grade form of. Then triple N medium, Norway, McNeil, McCall medium. And ELISA is a low efficacy. Treatment is sodium stilbegluconate 20 mg per kg intramuscular for 28 days. Amphotericin B deoxycholate 0.5 to 1 mg per kg for 14 to 21 days. Amphotericin B. Then malaria
So diagnostic investigations are CBC, thick and thin smear, ICT for malaria. Treatment, the drug of choice is chloroquine 5 mg per kg, then pramoquine. Its tablet form is available in 7.5 mg. So the topics which you need to prepare are the enteric fever. In the short case, enteric fever, malaria, leishmania, infectious mononucleosis, Gaucher disease, Niemann-Pick disease, hereditary spherocytosis, caput medullae, and Budd-Chiari syndrome. This is basically the short case. If you get a short case of the anemia with hepatosplenomegaly, or if you get hepatosplenomegaly, so what you have to look for anemia and jaundice. So if the description is of the GP, so first GP you have in all the short cases you have to go for the general look. After the general look, and there's a GP, you go for the vitals and other signs, and then the relative, like you have to just go for hepatosplenomegaly. If the command is abdomen and relevant, first you start with the abdomen and you just do the abdominal inspection, palpation, percussion, and back examination, and followed by the relevant. In that relevant, then you start from the hands, BCG scars, pulse is relevant, respiratory rate is relevant, and temperature is relevant, because the differentials can be narrowed down by infection, inflammation, and filtrations. So this is basically about the gist of the short case for the anemia or hepatosplenomegaly, and this is the basic guidelines. You can improve upon it. And thank you very much for your listening, and I wish and I pray that may Allah be our guide, protector, and helper. And please do give me your feedback, and I will be coming with the next another short case. Allah Hafiz.